मेकअप हमें अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र यूजिंग पॉन्ड्स सुपरलाइट जेल। आपको मॉइस्चराइज़र अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। इफ़ योर स्किन इज़ ड्राई देन यूज़ अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र, एंड इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली यू हैव टू यूज़ अ जेल बेस्ड और अ ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू हाइड्रेट योर स्किन बिफोर मेकअप, अदरवाइज़ आपका बेस केकी लग सकता है या फिर वो क्रैक हो सकता है। सो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आपको उसे 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज़र को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और स्किन मेकअप के लिए प्रेप हो जाए। देन द फर्स्ट स्टेप ऑफ बेस मेकअप इज़ अ प्राइमर। आपको प्राइमर भी अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन देन यू हैव टू यूज़ अ हाइड्रेटिंग वन, एंड इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली देन यू हैव टू यूज़ अ मैटिफाइंग और अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। प्राइमर आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देता है और आपको एक स्मूथ कैनवस देता है जिससे आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग बनता है। बेसिकली प्राइमर आपकी स्किन को स्मूदन आउट कर देता है जिससे वो और पॉलिश्ड और सुंदर दिखती है, और आपके पोर्स को भी ब्लर आउट कर देता है और आपको एक ब्लेमिश फ्री स्मूथ बेस दे देता है। इफ़ यू आर डूइंग मेकअप ऑन द डेली बेसिस यू कैन ऑल्सो यूज़ एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कलर करेक्शन। हम कलर करेक्शन इसलिए करते हैं ताकि हमारा फाउंडेशन या फिर कंसीलर ग्रे ना हो। इफ़ यू हैव डार्क सर्कल्स यू कैन यूज़ ए ऑरेंज करेक्टर टू न्यूट्रलाइज द पिगमेंटेशन और योर डार्क सर्कल्स। Here I am using Olivia pancake in the shade tender orange which is a perfect shade for color correction. And if you have active acne or red spots on your face you have to use a green corrector. You can even use a concealer to correct out those pigmented areas or spots on the face. I'm simply placing this orange corrector on the areas where I have pigmentation, dark spots and dark circles. Firstly, I will blend it out with my finger and then I will use a damp beauty sponge to blend it all. Proceeding to the next step is to use a foundation. You have to use a foundation which is suitable for your skin type. अगर आपकी skin type dry है तो आपको एक hydrating foundation use करना है, and if your skin type is oily you have to use or select a foundation which is of matte finish. Today I am using the Maybelline superstay foundation in the shade sun beige, और सबसे पहले मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करूँगी ताकि फाउंडेशन का एप्लीकेशन इवनली हो। अगर फाउंडेशन लगाने के बाद आपका फेस ड्राई फील करता है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ और ऐड फेशियल और बेबी ऑयल इन योर फाउंडेशन। Here I am using a damp beauty blender to blend out my foundation. You can also use a kabuki brush or a stippling brush to blend out your foundation. This is all up to you, whatever you want to use. आपको फाउंडेशन अपने नेक एरिया पे भी लगाना है। आज मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि आई एम वेयरिंग दिस हाई नेक। नाउ हियर इज़ अ टिप, यू हैव टू गिव टाइम टू योर ब्लेंडिंग, अदरवाइज़ आपका फेस और आपका फाउंडेशन केकी लग सकता है अगर वो ठीक से ब्लेंड नहीं होगा तो। सो बी पेशेंट एंड you have to blend your foundation really well. And if you're not comfortable in using liquid foundation, you can also go for the stick foundations which are easily available in the market. अगर आप daily basis पर makeup कर रहे हो, you can even use BB cream or CC cream or a lightweight foundation like mousse foundation. And foundation हमेशा आपको अपने skin tone से matching लेना चाहिए. Then coming to the next step is to conceal your blemishes, your dark circles and the pigmented areas. I'm using this Elegant Pro Conceal and its shade is Fawn. So concealer हमें अपने highlighted areas पे लगाना है like under eyes, bridge of the nose, center of your forehead and cupid's bow and the chin area. You have to select a concealer which is at least 2 or 3 shades lighter than your skin tone so that it can easily highlight your face up. Mainly we have to focus on the center areas of our face. Like I'm here using the same damp beauty sponge जिससे मैंने foundation blend किया था. Don't go for very lighter shades of concealer, otherwise आपकी under eyes और जहाँ पे आप lighter shade concealer लगाएंगे वो area grey दिख सकता है. आपको अपना कंसीलर डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है. अगर आप स्प्रेडिंग मोशन में उसे ब्लेंड करोगे तो वो उस एरिया से हट जाएगा जहाँ पे आपने उसे एक्चुअली प्लेस किया है.
Now the next step is to use a compact or a loose powder. I'm using Maybelline New York Fit Me Matte Plus Poreless compact powder. Then I will simply place it around my areas where I have used concealer to set it all. This is really important to set your concealer with a loose powder or a compact powder so that वो crease ना करे और cakey ना लगे. Now proceeding to the next step. The next step is blush. Today I'm not going to use any powder blush. आज मैं lipstick से blush लगाऊंगी. And let me show you how I use lipstick for my blush. Do not apply directly lipstick to your face. आप सबसे पहले उसे अपने back of hand पे ले लीजिए and उसे थोड़ा थोड़ा finger से आप build कीजिए. अगर आप ज़्यादा एक बार में लगा लेंगे तो वो blend नहीं होगा. Using the same damp beauty sponge मैं उसे blend कर रही हूँ. लिपस्टिक से अगर आप ब्लश लगाते हो तो वो ज़्यादा देर तक स्टे करती है एज़ कम्पेयर टू पाउडर ब्लशेस. दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस टुडे. नेक्स्ट इज़ कंटूरिंग. You can use any brown shade or a shade which is at least 2 or 3 shades darker than your skin tone. I'm going to use this palette which is from Miss Claire and I will use a brush to contour my face. अगर आप कंटूर करते हो तो उससे आपका फेस बहुत ही स्कल्प्टेड दिखता है और आपके फीचर्स और शार्प दिखते हैं. तो कंटूर मैं करूँगी अपने फेस को अपने हॉलोज ऑफ चिक्स पे, फोरहेड पे, जॉ लाइन पे, नोज. कैन ऑल्सो डू क्रीम कंटूरिंग बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद द पाउडर कंटूरिंग. You have to blend the contouring really well. Now I'm doing my nose contouring with the help of a small blending brush. आपको नोज़ कॉन्टूरिंग करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है. आईब्रोज से लेके आपको टिप ऑफ द नोज़ तक ब्राउन कलर को बिल्ड करना है और उसे ब्लेंड करना है जिससे कि वो ज़्यादा नेचुरल लगे. आफ्टर कॉन्टूरिंग, कमिंग टू द ग्लिटरी पार्ट ऑफ द बेस मेकअप इज़ हाईलाइटिंग योर फेस. आई एम यूजिंग द सेम पैलेट फ्रॉम मिस क्लेयर. It has beautiful colors for highlighting your face. It has golden shimmers and silver shimmers. I'm highlighting the highest points of my face like eyebrow bone and the inner corner of eyes. Highlighting gives your face a very glittery and highlighting effect which enhance the features of your face and also it makes your makeup look bomb. I'm going to highlight my areas like cheekbones and nose area, cupid's bow and the chin area. Now the last step of base makeup is to seal your makeup using a setting spray. So मैं क्या करती हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से जिससे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया था उसी पे स्प्रे करके अपने पूरे फेस पे सेट कर लेती हूँ. बट आप सेटिंग स्प्रे डायरेक्टली अपने फेस पे स्प्रे भी कर सकते हो. तो हेयर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. All the products which I have used in this video are mentioned in the description box below.